गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है आयुष्मान भारत टू ऑल सीनियर सिटीजन्स। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बीजेपी ने जो है अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया है कि वो आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है वो सीनियर सिटीजन्स के लिए लेकर आएंगे। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में लॉन्च की गई थी स्कीम, जिसमें कि लगभग 40% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो जो कंट्री की जो कि पुअरेस्ट और वल्नरेबल है उनको टारगेट किया गया है। ये स्कीम जो है आयुष्मान भारत का ही एक सेकंड कंपोनेंट है और इस स्कीम में मेडिकल कवरेज दी जाती है 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी और टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन पुअर और वल्नरेबल फैमिलीज़ को। इससे पहले जो है इसमें 10.74 करोड़ पुअर डिप्राइव्ड रूरल फैमिलीज़ और ऑक्यूपेशनल कैटेगरी जो अर्बन वर्कर्स की थी उनको ये स्कीम जो है दी गई थी। लेकिन स्टेट्स जो हैं जो इम्प्लीमेंट कर रही हैं उन्होंने इसको ब्रॉडन करके 13.44 करोड़ फैमिलीज़ जो है वो अब स्कीम के बेनिफिट में दे दी हैं। जो बेनिफिशरीज़ हैं स्कीम के वो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के डेटा के हिसाब से आइडेंटिफाई किए जाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि कैशलेस एक्सेस मिलता है हेल्थ बेनिफिट पैकेजेस का, जिसमें सर्जरी, मेडिकल केयर, मेडिकल डे और डे केयर ट्रीटमेंट्स, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, डायग्नोस्टिक्स, ये सब कवर होता है। तो कंट्री में जो है एजिंग पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, जो फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हो रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। तो इंडिया की पॉपुलेशन जो है उसकी वजह से ग्रो हो रही है। 2011 के सेंसस के हिसाब से कंट्री में सिर्फ 8.6% जो है 8.6% जो पॉपुलेशन है वो 60 साल से ऊपर की एज की थी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 2050 तक ये प्रपोर्शन 19.5% पहुंच जाएगा। मतलब क्या हुआ इसका कि एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ बढ़ेगा हमारा। सीनियर सिटीजन जो है वो हाईएस्ट बर्डन ऑफ क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस को भी से भी सफ़र करते हैं, कॉम्प्लिकेशन से सफ़र करते हैं, उनकी कॉस्ट ऑफ हेल्थ जो है वो हाई होती है। तो कंट्री में जो इंश्योरेंस कवरेज है वो भी बहुत ही कम है। इंडिया एजिंग रिपोर्ट में कहा गया कि 20% जो लोग हैं ओवर द एज ऑफ 60 ईयर्स सिर्फ उन्हीं के पास हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स हैं। कवरेज जो है वो भी मैन में ज़्यादा है दैन वुमेन। और इंडिया एजिंग रिपोर्ट में ये भी देखा गया कि लैक ऑफ कवरेज की वजह से जो है ये इसलिए कवरेज कम है क्योंकि लोगों में अवेयरनेस भी कम है और एक तो अफोर्डेबिलिटी भी नहीं है। तो एल्डरली जो है वो क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ से सफ़र करते हैं। तो वो अपार्ट फ्रॉम दैट इन्फेक्शियस डिसीज़ भी उनको ज़्यादा होती है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक हो चुका होता है। गवर्नमेंट जो है वो मोस्ट ऑफ द मनी प्रोवाइड करती है ट्रीटमेंट में, और प्रेडोमिनेंटली जो एल्डरली पॉपुलेशन के ट्रीटमेंट में खर्चा होता है वो अभी तक गवर्नमेंट ही कर रही है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, फोर्थ ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूएस नेशनल ओशैनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से फोर्थ ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट जो है वो ट्रिगर हो चुका है एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओशन टेम्परेचर्स की वजह से। तो कोरल्स क्या होते हैं? अंडर वाटर एनिमल्स होते हैं जो एक जगह पर रहते हैं ओशन फ्लोर पे। ईच इंडिविजुअल कोरल एनिमल जो है उसको हम पॉलिप कहते हैं और ये ग्रुप्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स में रहते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल पॉलिप्स, जिससे कि एक कॉलोनी बनाते हैं। कोरल्स जो है इनको क्लासीफाई किया जाता है या तो हार्ड कोरल या फिर सॉफ्ट कोरल। और अनलाइक सॉफ्ट कोरल्स, हार्ड कोरल जो है वो टाइनी स्केलेटन्स होते हैं जो कि लाइमस्टोन से बने होते हैं। जब ये पॉलिप्स मर जाते हैं तो स्केलेटन्स पीछे रह जाते हैं और जो है फाउंडेशन का काम करते हैं न्यू पॉलिप्स के लिए वो। अब जो हार्ड कोरल्स होते हैं वो कोरल रीफ्स के आर्किटेक्ट्स होते हैं। कोरल रीफ्स जो है वो रेन फॉरेस्ट हैं एक तरह से सी के, और ये लगभग 450 मिलियन ईयर्स से एग्जिस्ट कर रहे हैं अर्थ पे। जब सबसे लार्जेस्ट जो है वो है ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि 2300 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है। अब सिग्निफिकेंस देखें अगर हम कोरल्स की, तो ग्रेट बैरियर रीफ में लगभग 400 कोरल स्पीशीज़ हैं, 1500 फिश स्पीशीज़ हैं, 4000 मॉलस्क स्पीशीज़ हैं, 6 ऑफ द वर्ल्ड 7 सी टर्टल स्पीशीज़ हैं। कोरल रीफ्स लगभग 97% ऑफ एनर्जी जो है वेव्स, स्टॉर्म्स और फ्लड्स से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कोरल रीफ्स जो है इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करते हैं, जैसे फिशिंग, टूरिज़्म, लाइवलीहुड सपोर्ट करते हैं बहुत सारे लोगों का। कोरल्स में से जो है न्यू मेडिसिन, साइंटिफिक डिस्कवरीज होती हैं, अर्थ के क्लाइमेट को भी रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। कोरल ब्लीचिंग फिर क्या है? तो पहले तो आप समझो कि कोरल्स और जूसेंथले क्या है। ये बेसिकली दो ऑर्गेनिजम्स हैं, इन दोनों में आपस में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। जूसेंथले एक बेसिकली एल्गी है और कोरल्स इनको जो है एक सेफ प्लेस टू लिव देते हैं, और उसके रिटर्न में जूसेंथले ऑक्सीजन और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स देती है फोटोसिंथेसिस का, कोरल्स को ग्रो और थ्राइव होने के लिए। जूसेंथले जो है ब्राइट और यूनिक कलर्स भी देती है कोरल्स को। कोरल्स ब्लीचिंग में क्या होता है, कोरल्स क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव होते हैं लाइट और टेम्परेचर पे, अगर ज़रा सा भी स्ट्रेस आता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो ये जूसेंथले को निकाल देते हैं और खुद फिर वाइट कलर के हो जाते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि कोरल ब्लीचिंग का मतलब ये नहीं कि डेथ हो जाती है कोरल्स की, बस वो मतलब एक्सपोज हो जाते हैं और ज़्यादा स्ट्रेस को।
तो वो ज़्यादा उनकी डेथ होने का चांस हो जाता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि अगर टाइम से जो है ये फिनोमिना रोक दिया जाए तो ये ब्लीचिंग के बाद भी जो है कोरल्स रिकवर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चौथी कोरल ब्लीचिंग होगी ग्लोबल लेवल पर। पहली हुई थी 1998 में, नेक्स्ट जो इवेंट हुई थी 2010 में, फिर उसके बाद 2014 से 17 के बीच में हुई। मोस्टली अगर आप देखोगे तो ये उन टाइम पर हो रही है जब एल नीनो इवेंट चलता है, ठीक है, जब ग्लोबल टेम्परेचर्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इस साल भी जो है एल नीनो ईयर रहा है, और अब वो वेदर पैटर्न जो है वो होपफुली जब लानीना फॉर्म हो जाएगा इस साल, तो ये जो है रिवर्स होना शुरू हो जाएगा वेदर पैटर्न, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, फॉल इन हाउस होल्ड सेविंग्स इन इंडिया। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हाउस होल्ड सेविंग्स में फॉल जो है वो एक रीसेंट डिबेट्स का जो है पार्ट बनी है, क्योंकि उससे नेट फाइनेंशियल सेविंग्स में ड्रास्टिक रिडक्शन देखने को मिल रही है। तो नेट फाइनेंशियल सेविंग्स जो है हाउस होल्ड्स की क्या होती है कि जो उनका ग्रॉस फाइनेंशियल सेविंग्स है और बोरोइंग जो उसका डिफरेंस जो होता है उसको हम उनकी नेट फाइनेंशियल सेविंग्स कहते हैं। तो जो ग्रॉस फाइनेंशियल सेविंग्स हैं हाउस होल्ड्स की, वो दिखाती हैं कि उनके फाइनेंशियल एसेट्स कैसे चेंज हुए हैं एक पीरियड ऑफ टाइम में। फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं हाउस होल्ड्स के, उसमें बैंक डिपॉजिट्स, करेंसी, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स आता है, और हाउस होल्ड बोरोइंग में आता है जो उन्होंने क्रेडिट लिया हुआ है कहीं से भी, मोस्टली कमर्शियल बैंक से। हाउस होल्ड जो है अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए अपनी बोरोइंग को बढ़ाते हैं, जिससे कि उनकी सेविंग्स कम हो जाती है। या फिर क्या हो सकता है सेकंड ऑप्शन, कि अपनी वो फिजिकल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, टेंजिबल इन्वेस्टमेंट जैसे घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो, उसके लिए वो बोरोइंग करते हैं, अपनी फाइनेंशियल सेविंग्स को डिप्लीट करते हैं। तीसरा होता है जब उनकी इंटरेस्ट पेमेंट जो होती है वो बढ़ जाती है लोन्स पर, तो भी जो है उनकी जो है सेविंग्स कम हो जाती है, क्योंकि जब हाई इंटरेस्ट रेट हो जाएगा तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है अपनी बोरोइंग्स पर, तो उसकी वजह से भी जो है उनकी सेविंग्स कम हो जाती हैं। जो सबसे पहला फैक्टर है जो एडिशनल कंजम्पशन के लिए, वो बहुत ज़्यादा रोल नहीं प्ले करता है इंडिया में। सेकंड भी उतना ही लिमिटेड रोल प्ले करता है जब उनको अपनी असेट्स खरीदने होते हैं। लेकिन जो थर्ड वाला फैक्टर है, जिसमें जब भी आप हाई इंटरेस्ट रेट देखोगे तो जब उनकी इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाएगी तो उनकी फाइनेंशियल सेविंग्स पर इफेक्ट आता है। ये सबसे ज़्यादा एट्रीब्यूट करता है जो है फाइनेंशियल सेविंग्स को इरोड करने में। तो इसका जो है, अगर हाउस होल्ड डेट बढ़ेगा तो उससे टू कंसर्न्स हो जाते हैं मैक्रो इकोनॉमी के लिए। एक तो पहला, उनकी डेट रीपेमेंट की कैपेसिटी कम हो जाती है तो फाइनेंशियली फ्रेजाइल हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है, क्योंकि उनकी सेविंग्स कम हो गई है तो फिर वो कंजम्पशन भी कम करेंगे, कंजम्पशन डिमांड पर इफेक्ट पड़ता है। तो जब इंटरेस्ट रेट और इनकम ग्रोथ रेट में डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब अगर आपका इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में बढ़ रहा है तो जो उन लोगों की इनकम है वो भी, उसका भी ग्रोथ रेट उसके साथ मैच करता होना चाहिए। अगर वो कम रहेगा तो इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेगा तो उनकी फाइनेंशियल सेविंग्स जो है वो डिप्लीट होनी शुरू हो जाएंगी, और जब उनकी फाइनेंशियल सेविंग्स जो है डिप्लीट होनी शुरू हो जाएगी तो जो इंटरेस्ट पेमेंट्स पे वो डिफ़ॉल्ट करना शुरू करेंगे, और जो इंटरेस्ट पेमेंट्स होती हैं वो फाइनेंशियल सेक्टर के लिए इंटरेस्ट इनकम होती है, तो फिर ऑफ कोर्स इंटरेस्ट इनकम भी जो है फाइनेंशियल सेक्टर के लिए जो कम होने लगेगी, तो उसका कास्केडिंग इफेक्ट शुरू हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमी पे, और उसका इफेक्ट ओवरऑल देखने को मिलेगा कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी जो है हाउस होल्ड का वो भी कम हो रहा है। तो ओवरऑल इकोनॉमी उससे हार्म होगी, क्योंकि आप कंज्यूम नहीं करोगे, डिमांड कम हो जाएगी प्रोडक्ट्स की, इकोनॉमी सफ़र करेगी, है ना। तो हाउस होल्ड्स जो हैं ससेप्टेबल रहते हैं खासकर इन इंटरेस्ट रेट्स के जो है फ्लक्चुएशन से। हायर इंटरेस्ट रेट्स को हम यूज़ तो कर लेते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उससे हाउस होल्ड्स के डेट लेवल राइज हो जाते हैं और उनको डेट ट्रैप के डेंजर में हम जो है वो फेंक देते हैं एक तरह से। तो एडवर्स इम्पैक्ट आता है उससे कंजम्पशन के ऊपर, और एग्रीगेट डिमांड पर भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। हाउस होल्ड बैलेंस शीट जो है वो एक ब्रॉडर चेंज दिखाती है हमारे को कि इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में क्या जो है वो चेंज देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं BFI बायोम वर्चुअल नेटवर्क प्रोग्राम, एनवायरनमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो सी कैम्प, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर प्लेटफॉर्म्स, उन्होंने ब्लॉकचेन फॉर इम्पैक्ट बायोम वर्चुअल नेटवर्क प्रोग्राम जो है वो ज्वाइन किया है ट्रांसफॉर्मेटिव हेल्थ केयर सोल्यूशंस को एक्सेलरेट करने के लिए। तो ये BFM बायोम वर्चुअल नेटवर्क प्रोग्राम नर्चर करेगा कटिंग एज बायोमेडिकल साइंस और इनोवेशन, और एक्सेलरेट करेगा इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव साइंटिफिक एडवांसेस, जिससे कि हेल्थ केयर चैलेंजेस को डील करने में हमें हेल्प होगा। तो ये इंक्यूबेटर्स और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को एक सिंगल अम्ब्रेला के अंदर यूनाइट करता है ये प्रोग्राम, और इसमें $2 लाख जो है वो ओवर द कोर्स ऑफ 3 ईयर्स जो है वो दिए जाएंगे, और
इससे जो है सी कैंप अपनी एसेंशियल जो हेल्थ केयर बेस्ड स्टार्टअप्स हैं उनको हेल्प कर सकेगा। तो सी कैंप एक इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का 2009 से इनोवेशन इन लाइफ साइंसेज को सपोर्ट करने के लिए। तो इससे जो है एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन दोनों को ही जो है प्रमोट किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं समिट ऑफ द फ्यूचर। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस और सोशल इश्यूज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स जो है उनके रिफॉर्म एक की थीम रहेगा इस साल की समिट ऑफ द फ्यूचर में। ठीक है, तो समिट ऑफ द फ्यूचर एक हाई लेवल इवेंट है जिसमें वर्ल्ड लीडर्स इकट्ठे होते हैं एक बेटर प्रेजेंट और फ्यूचर को सेफ गार्ड करने के लिए। तो एक मोमेंट होता है जिसमें कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन को जो है वो लीवरेज किया जाता है करंट चैलेंजेस को टैकल करने के लिए। तो इसमें यूएन मेंबर स्टेट्स, यूएन एजेंसीज, एनजीओ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट सेक्टर, यूथ जो है सब आते हैं एक फोरम पे और इसी के थ्रू जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल समिट भी जो है वो बिल्ड की जाती है। तो इस साल जो है कहा जा रहा है इस बार जो समिट ऑफ द फ्यूचर होगी वो 5 की टारगेट्स को जो है सेंटर करेगी। यूएन चार्टर के ऊपर, मल्टीलैटरलिज्म, एग्जिस्टिंग कमिटमेंट्स को बूस्ट की इम्प्लीमेंटेशन को फोकस रखना, न्यू चैलेंजेस के ऊपर सॉल्यूशंस ढूंढना और ट्रस्ट को रिस्टोर करना। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ज़ीरो शैडो डे। टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो है उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दिया गया ज़ीरो शैडो डे का पौंडीचेरी साइंस फोरम द्वारा। ज़ीरो शैडो डे क्या होता है? एक सब सोलर पॉइंट होता है जब सन डायरेक्टली आपके एक किसी भी लैटिट्यूड के बिल्कुल ऊपर होता है, बिल्कुल जेनिथ पर होता है। तो जो रेज होती हैं वो एक जगह पर परपेंडिकुलर पड़ रही होती है तो उसकी वजह से कोई शेडो नहीं बनती है। तो ये बहुत ही छोटा टाइम पीरियड होता है, मतलब वो वैसे तो ये एक स्मॉल पार्ट ऑफ अ सेकंड के लिए एग्जिस्ट करता है लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो मिनट या 1.5 मिनट तक देखा जा सकता है। तो 2 शैडो डे होते हैं हर साल, एक मई में और एक जुलाई अगस्त में, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में सन जो है मूव कर रहा होता है। तो एक टाइम कौन सा होता है? जो मई वाला टाइम जब सन नॉर्थवर्ड मूव कर रहा है जिसको हम उत्तरायण कहते हैं, और एक टाइम होता है जब सन साउथवर्ड मूव कर रहा है जिसको हम दक्षिणायन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रैम्पेज मिसाइल। सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इसराइल ने रिसेंटली रैम्पेज मिसाइल का यूज़ किया जो कि एक एयर टू सरफेस मिसाइल है ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए। तो रैम्पेज मिसाइल एक लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल है जिसको इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ और इसराइली मिलिट्री इंडस्ट्रीज सिस्टम ने बनाया है। सुपरसोनिक स्पीड में ट्रैवल करता है, 190 माइल्स तक की इसकी रेंज है, 150 किलोग्राम ऑफ एक्सप्लोजिव भी अपने साथ लेकर जा सकता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज पूर्वी लहर। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेवी ने एक्सरसाइज पूर्वी लहर जो है ईस्ट कोस्ट पर जो है वो कंडक्ट की है। तो ये एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो इंडियन नेवी कंडक्ट करती है। इंडियन नेवी अपने मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस जो है रीजन में उसके लिए प्रिपरेडनेस को देखती है इस एक्सरसाइज के थ्रू। मल्टीपल फेजेस में ये एक्सरसाइज की जाती है। तो इसमें इंडियन एयरफोर्स, अंडमान और निकोबार कमांड और कोस्ट गार्ड के भी जो है पार्टिसिपेशन देखने को मिलती है। ओके, सो नाउ let us see all these topics in English. So the first topic is Ayushman Bharat to all senior citizens. This topic is important for your governance section. So while releasing its election manifesto for the Lok Sabha elections, the BJP has promised to expand the Ayushman Bharat health insurance scheme to cover senior citizens. Of course, not all senior citizens, but up to a certain specific age. I think it is the seniors above the age of 70 years. Okay, so what is Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana? So it was launched in 2018 and this scheme covers over 40% of the population, targeting the poorest and the vulnerable in India. So it was launched as a second component of Ayushman Bharat scheme and it offers medical coverage of 5 lakh rupees per family per year for secondary and tertiary care hospitalization to poor and vulnerable families. Earlier the scheme was targeting about 10.74 crore poor deprived rural families and identified occupational category of urban workers families, but the states who are implementing the scheme have broadened this reach to encompass 13.44 crore families, okay, which is about 65 crore people. The beneficiaries have been identified by the latest socioeconomic and caste census data, and this scheme provides cashless access to health benefit packages which covers surgery, medical care, day treatments, cost of medicines and diagnostics. So what is the need of this promise? So we know that India is
reaping the benefits of demographic dividend at present, but declining fertility rate and increasing life expectancy means that India's population is growing old. So only 8.6% of India's population was over the age of 60 years in 2011, but this proportion is expected to increase to 19.5% by 2050, which would mean increased expenditure on health. Senior citizens also face the highest burden of chronic health conditions, and their cost of health is very high for them. So, as per the India Aging Report of 2023, just over 20% of people who over the age of 60 years were covered under health schemes, and coverage is high was seen as higher in elderly men than elderly women. And India Aging Report found that the main reasons for lack of coverage in elderly was low awareness and non-affordability. Elderly are not just affected by chronic non-communicable diseases, but they are also more prone to infectious diseases because they have a weakened immune system. Government is already incurring most of the money in providing treatment and for the elderly population, and this data also shows that this scheme will benefit the senior citizen the most. Okay. So the next topic is fourth global mass coral bleaching event. This topic is important for your environment section. So as per the US National Oceanic and Atmospheric Administration, the fourth global mass coral bleaching event has been triggered by extraordinary ocean temperatures. So what are corals and coral reefs? So corals are the underwater animals which stay in one place on the ocean floor. Each individual coral animal is known as a polyp, and they live in groups of hundreds to thousands of genetically identical polyps. They form a colony. Corals are classified as either hard corals or soft corals. Unlike soft corals, hard corals have stony skeletons made out of limestone. And when polyps die, their skeletons are left behind and they are used as foundations for new polyps. So coral reefs are the hard corals and they are the architects of the coral reefs. Coral reefs are also referred to as the rainforests of the sea, and they have existed on Earth for nearly 450 million years. So what is the significance of corals? So we know that Great Barrier Reef, which it contains over 400 coral species, 1500 fish species, 4000 mollusk species, and 6 of the world's 7 sea turtle species. Coral reefs can absorb up to 97% of the energy from waves, storms, and floods. The coral reefs support industries like fishing and tourism. Corals also hold potential for new medicines and scientific discoveries. They also help to regulate Earth's climate by absorbing carbon dioxide from the atmosphere. Okay. So what is coral bleaching? So most corals contain algae called the zooxanthellae, and corals and zooxanthellae have a symbiotic relationship. Corals provide zooxanthellae a safe place to live. On the other hand, zooxanthellae provide oxygen and organic products of photosynthesis, which helps corals to grow and thrive. Zooxanthellae also give bright and unique colors to corals. Corals are very sensitive to light and temperature. When they become stressed, they expel zooxanthellae and they turn entirely white. Coral bleaching does not immediately lead to the death of corals, but they rather go under very severe stress and they become subject to mortality. Coral bleaching also reduces the reproductivity of corals and makes them more vulnerable to fatal diseases. But if the bleaching is not very severe, then corals have known to recover. Okay. So this will be the fourth global mass coral bleaching. The first one took place in 1998. The next two global bleaching events occurred in 2010, and the third one was between 2014 and 2017. And if you can look, then you will see that these three global bleaching events also occurred when there was El Nino phenomena going on. This year also last year actually. Since last year, we have been witnessing the El Nino phenomena, and this coral bleaching is coinciding with that phenomena only. Okay, once the El Nino dissipates, which the Pacific in the Pacific, which the scientific community is saying that it has already started to wither away, and once the La Nina phase sets in, and perhaps there is a great hope that this coral bleaching event would stop. Okay. So the next topic is fall in household savings in India. This topic is important for your economy section. So the fall in household savings has been at the heart of recent debates in India, which is brought about
by a drastic reduction in net financial savings. So we know that net financial savings of households is the difference between their gross financial savings and the borrowings that they have made. So gross financial savings of a household is the extent to which financial assets change during a period. So financial assets of a households typically comprise of bank deposits, currency, financial investments, and the borrowing is basically the loans or the borrowings that they have made from commercial banks or other non-banking financial corporations. Households generally why they borrow. So generally households they use borrowing to fund their additional consumption expenditure. Second is when they want to purchase or when they want to go for higher physical investment, they increase their borrowing. And the third is when they are making interest payments and the interest rates become high, then their financial savings suffer. Okay, so the first factor in which they are consuming more, for that their financial saving is suffering, this has hardly played any role in Indian economy. Even the second factor in which they are purchasing or making investments, it has also played a limited role. But when the interest rates are increased, their interest payment also increases, so that affects their financial savings. This has played a major role in impacting the gross financial savings of the households. So this rise in household debt is a major concern for the economy. Of course, it affects their debt repayment capacity and they become financially fragile. It also impacts the consumption demand, because if their financial saving gets eroded, they would stop consuming more, and this would of course lead to a cascading effect on the economy. So the difference between interest rate and the income growth rate should not be very high, which means that the EMI that you are paying, the growth of that EMI rate should be commensurate with at least commensurate with the growth in your income. Otherwise, if your income is growing slow, but your interest payments or your EMI is growing fast, then of course you would have less savings in your hands. So this what would this mean? Interest payments from the households are the interest payments of the financial sector or the banks. So if you falter on your debt repayment, it would reduce the income of the financial sector also or the banks. This will have a cascading effect on the macroeconomy. So the consumption expenditure of the household is also affected by their wealth, debt, and interest rate. So that's why we have to while looking at the while looking at the macroeconomic fundamentals, we have to see the impact of higher interest rates on the net financial savings of the households. So households become susceptible when interest rates increase. So generally the central banks use this higher interest rates to combat inflation, but this can cause household debt levels to increase, and they are put into a debt trap or into the danger of debt trap. So the adverse impact of consumption on the households also affects the aggregate demand. So that's why while looking at a household balance sheets, you can see the broader change in the structure of our economy. Okay. So the next topic is BFI Biome Virtual Network Program. This topic is important for your environment section. So Center for Cellular and Molecular Platforms has joined the Blockchain for Impact Biome Virtual Network Program to accelerate transformative healthcare solutions. So this will nurture cutting-edge biomedical science and innovation, and it will accelerate the impact of transformative scientific advances to address the key healthcare challenges in India. So it unites incubators and research institutes under a single umbrella. BFI will be allocating $2 lakh over the course of 3 years, which CCAMP will be leveraging to develop essential programs for healthcare-based startups. So what is CCAMP? So it's an initiative which is supported by Department of Biotechnology, and it has been a catalyst of cutting-edge research and innovation in the life sciences since 2009. So it is mandated to promote entrepreneurship and innovation. Okay. So the next topic is Summit of the Future. This topic is important for your international relations topic. So UN Secretary General has said that reform of multilateral development banks will be a key theme at this year's Summit of the Future. So Summit of the Future is a high-level event bringing world leaders together, and it will
forge a new international consensus on how we are going to deliver a better present and safeguard the future. So it will serve as a moment to mend eroded trust and demonstrate that international cooperation can effectively tackle current challenges. So this high-level event will bring together UN member states, UN agencies, NGOs, civil society organizations, academic institutions, private sector, and youth under this event, and they aim to build upon the Sustainable Development Goals Summit also. Okay, so UN member states have agreed that Summit of the Future will be centering around 5 key targets. The first will be reaffirmation of the UN Charter, reinvigorating multilateralism, implementing the existing commitments, agreeing on solutions to new challenges, and restoring trust. So the next topic is Zero Shadow Day. This topic is important for your environment section. So a group of students were provided a first-hand experience of the Zero Shadow Day by Pondicherry Science Forum. So what is Zero Shadow Day? It's a subsolar point when the sun is directly overhead at a particular latitude. So when the sun is at its zenith, that is the highest point in the sky, the rays of the sun will be hitting a particular point exactly perpendicular to the surface, and it will be creating no shadows. Okay, so there are 2 shadow days every year in May and July, August, when the sun is transiting between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. When it is moving northwards, that is Uttarayan, and the second one falls when it is moving southwards, which we call as Dakshinayan. So this moment lasts for a small part of a second, but its effect can be seen for a minute to a minute and a half. Okay. So the next topic is Rampage missile. This topic is important for your security section. So Israel has recently used the Rampage air-to-surface missile to attack an Iranian military base. So Rampage missile is a long-range supersonic air-to-ground seekerless precision strike missile, which has been developed by Israeli aerospace industries and Israeli military industries system. So it may travel at supersonic speeds. It has a range of over 190 miles, and it can carry 150 kg of explosives. So the next topic is exercise Purvi Lahar. This topic is again important for your security section. So Indian Navy has recently conducted exercise Purvi Lahar on the east coast. So it's a maritime exercise conducted by the Indian Navy, and it assesses the Indian Navy's preparedness to meet maritime security challenges in the region. So this is conducted in multiple phases, including combat training in a realistic scenario, and it also saw participation from the Indian Air Force, Andaman and Nicobar Command, and also the Coast Guard to check interoperability amongst the services. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.